Distinguished panel members, Professor Dr. 𝗟𝐶𝐂 𝐓𝐴, Professor in Charge, Campus Law Center, Professor Dr. Gunjan Gupta, Dr. Seema Singh, Faculty Convener of Debate Society, and all the students and viewers who have joined us across all the platforms, a very good evening to one and all. I, Vandana Yadav, Student Convener of Debate Society, welcome you all to yet another session of Town Hall, this time organized on the topic, the liberty of choice and the choice of liberty, specifically focusing on the hijab debate. In order to have a robust discussion and to bring out different jurisprudential or legal dimensions, feminist viewpoints, and religious perspectives, we are joined by a diverse panel of eminent personalities. Without taking much time, I would now like to take this opportunity to welcome and briefly introduce the panelists for today. The first panel member we have with us is Honorable Justice Iqbal Ahmed Ansari. He is currently the chairperson of Punjab State Human Rights Commission, and formerly he had been the 39th Chief Justice of Patna High Court. Justice Ansari, with his analytical intellect and judicial rectitude, has the privilege of being one of these judges in the country having the highest number of reported judgments, very often quoted in judicial proceedings. Thank you, sir. It's our honor to have you with us. Moving towards our second panelist, we have Advocate Monica Arora with us. She has been the standing counsel for Government of India in Delhi High Court. A lawyer with zeal and passion, she has represented various ministries and argued many important cases and public interest litigations. Currently, she is also the chairperson of Group of Intellectuals and Academicians, a Delhi-based think tank working for social justice, equality, and liberty among the women in society. Thank you, ma'am, for joining us. Moving further, introducing the third panelist of the evening, Maulana 𝐶𝐂 𝐓𝐿, an Urdu scholar and expert in Islamic teachings. He is the national president of Jamaat Ulema-e-Hind, one of the leading organizations of Islamic scholars. He has also been the president of Ayodhya Varta Committee set up in 2016 to resolve the Ayodhya land dispute. Currently, he is also representing the Muslim Rashtriya Manch as its national convener. I extend my heartfelt thanks and regards to you, sir. Your inputs, your expertise in Islamic studies will definitely help us understanding the issue. Now, we regret to inform you that Ms. Rubika Liakaji would not be able to join us at this moment due to some unforeseen circumstances. We hope to have her joined in due course of time. Now, I request Dr. Gunjan Gupta, Professor of Law, Campus Law Center, to deliver the welcome address. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. I'm extremely elated to extend my warm welcome today to our esteemed guests, Honorable Justice Iqbal Ahmed Ansari, former Chief Justice of Patna High Court and Chairperson, Punjab State Human Rights Commission, Ms. Monica Arora, advocate, author, and Chairperson, Group of Intellectuals and Academicians, and Maulana Sohaib Kasmi, National President, Jamaat Ulema-e-Hind. My dear colleagues and dear students, on behalf of the Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi, I'm very pleased that the Debate and Discussion Society have conceived this debate revolving around such an important, pressing, and rather a buzz topic, which is liberty of choice and choice of liberty, the hijab debate. In the legal world, liberty and its meaning has been explored and interpreted time and again in various contexts by the courts, jurists, legal philosophers, and academicians. However, as a basic principle of law and an epitome of human existence in civilized societies, it is pivotal to revisit the ideology from the pretext of ever-evolving socio-legal and cultural understandings. The recent discourse pertaining to the rights of Muslim women to wear a hijab has not only been a widely discussed matter, but is also a subject that needs to be looked through the lens of various perspectives. While there are numerous socio-cultural, religious, and historical standpoints involving the matter, as law students, it is crucial for us to deliberate on this issue from the panorama of law and legal rights. From the legal vista, to determine any issue, it is a prerequisite to dive into the history,
evolution, custom, and continuity of practice before accepting or rejecting any matter. Further, a rather pivotal consideration is also to highlight public morality, justice, equality, and fair conscience. Hence, it is definitely not easy to deduct any standing on such matters as whether the right to wear hijab can be considered to be a matter of liberty enshrined within the constitutional philosophy. Its analysis and examination demands a study into its practice, the way it expresses one's culture or religion, the element of liberty involved in such expression, and very importantly, the option of making an independent and free choice as to whether to adorn a hijab or not. Having said so, today, I look forward to a healthy discussion and a fair deliberation of the issue by examining various perspectives of various stakeholders and, above all, the national ideals that we look up to. I once again wholeheartedly welcome our esteemed guests to initiate this critical and heated topic for today's discussion. I also hope that my students will be proactive and engage in the socio-legal analysis of the matter. Thank you. Over to you, Vanna. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite and welcome Ms. 𝐂𝐻𝐿 𝐶𝐚𝐥𝐿 and Mr. 𝐕𝐺𝐴 Pujari, practicing advocates in Delhi High Court and currently serving as advisory committee members of Debate Society Campus Law Center, to moderate today's panel discussion. Thank you both of you for joining, and with this I request Ms. 𝐶𝐚𝐥𝐿 to please take over the platform. Thank you. Her open eyes desire the truth, the wisdom of 1,000 years is in them. May perpetual youth keep dry their light from tears, that her fair form may stand and shine. Make bright our days and light our dreams, turning to scorn with lips divine the falsehood of extremes. These are the beautiful words of Lord Tennyson, which he wrote in 1830s while personifying freedom as a goddess. And today, while moderating this panel discussion, we aim to contour the realms of freedom and liberty of a woman in India, with the hijab debate again bringing it into the main foray. We hope that this academic journey will enable the ongoing debate to cast into a new direction which is apolitical yet intertwined with the social and legal realities of India, that is Bharat. On this note, I now yield the floor to my able colleague, Mr. Vijay Pujari, to kindly initiate today's much awaited discussion. Over to you, Vijay. Thank you so much, 𝐂𝐻𝐿. I would like to thank Justice Ansari, Srimati Monica Arora, Maulana Sohaib Kasmi, and Professor Gunjan Gupta for their gracious presence today. Before we set the ball rolling, I would like to inform all the viewers joining us over YouTube that you could post your questions by filling up a Google form present in the YouTube description box. On that note, my first question is for Honorable Justice Ansari. Sir, how a gender-specific diktat that perpetually deprives an individual's right to express facially and right to be seen fit within the edifice of constitutional morality? The answer to it will depend upon how we look at it. Is that a deprivation, or this is something which is required? Constitutional morality means that whatever we do, whatever we say, whatever we act is in the form of advancing the Constitution and not pushing it backward. Now, as far as this subject which we are discussing today is concerned, that is in a way gender specific, no doubt. But if it is allowed, that means if hijab is allowed, then in that event the question will be for the woman to decide whether they would like or they would not like to do it. Anyway, for our convenience now, at least one High Court has already decided that this is not an essential feature of Islamic law.
meaning thereby that it is not necessary for a woman to wear hijab. If it is not necessary to wear hijab, then there is no impediment in the authorities of the school or colleges to prescribe the dress code which do away with the hijab. Right, sir. Thank you, sir. My next question builds a further context to the entire argument. It is for Monica, ma'am. Ma'am, you are a part of the ongoing hijab litigation. For the benefit of our viewers, can you please enlighten us with the essence of the Honorable Karnataka High Court's judgment in the present case? Thank you so much, Vijay. Now, Vijay, if I straight away start with the Karnataka High Court judgment, okay? So what was the contention of the petitioners? The girls who were 17 years old, 4 girls, and who was 18-year-old, they were represented by senior advocates. And the contention was that in the classroom, we want to wear hijab. Hijab is our fundamental right. It is essential religious practice in Islam. The government order cannot stop us from wearing hijab. This was their primary contention. They said they have right under Article 14, right to equality, Article 19, right to expression, Article 21, right to privacy, Article 25, freedom of religion. This was their contention. Now, this government order saying you subscribe to the dress code, wear your uniform, this violates all their fundamental rights. In essence, this was their contention. What did the state say? The state of Karnataka, they stated that there is no evidence to show that wearing hijab in classroom is essential religious practice in Islam. The state of Karnataka stated that Article 25, freedom of religion, is not absolute. It has a number of restrictions, reasonable restrictions, and state can always regulate the religious practices for social reform and public interest. Another very important point which Karnataka High Court Advocate General of Karnataka government stated was that he said school is a qualified public place. You have to adhere by the campus discipline. These are the students who have been brainwashed by fundamentalist organizations like Popular Front of India, Campus Front of India, Jamaat-e-Islami, SIMI. FIR has been lodged against us. Police is investigating as to what they all did to incite the students and disturb law and order. Now, thereafter, when Karnataka High Court heard both of them, I think for 4 days, both the sides argued. Primarily, the petitioners argued more because there was a battery of senior advocates speaking for these 16, 17, 18-year-old girls. They were not alone. So entire ecosystem was there to support them. Now, when for 3-4 days, they argued, the petitioners, and the state, I think it argued for 2.5 days. Thereafter, Karnataka High Court judgment, after listening to the rejoinder of the petitioners, they reserved the judgment. And they had framed 3 questions primarily for consideration. The first question, which was framed by Karnataka High Court, was whether wearing hijab or headscarf is part of essential religious practice in Islam and hence protected by Article 25 of the Constitution or not. Second question, which was framed by Karnataka High Court, was whether prescription of school uniform is not legally permissible and it violates Article 19, freedom of expression, and Article 21, right to privacy of Constitution or not. Third question was whether the government order of 5th of February 2022, which stated that you have to adhere to the uniform, is it competent? Is it valid? Is it legal or not? These were primarily, which affect us. These 3 questions primarily were framed by Karnataka High Court. There was one more question which doesn't affect us. Now,
This judgment, if we read this judgment, it is a beautifully written judgment. It is a very nicely chronologically written judgment. And 𝐶𝐸 will agree with me, and Malanji also, because this judgment starts by referring to Article 1 of the Constitution of India. This judgment says, Article 1 of the Indian Constitution says, India, that is Bharat. It talks about the civilizational values of India, of Bharat. It says Bharat has been there since centuries. It's an ancient civilization which has been housed and sheltered to many religions, many cultures, but all these religions and cultures have coexisted. Thereafter, the judgment says that 42nd Amendment introduced the concept and the word of secularism, but we have always been secular. And our secularism is positive secularism, Sarv Dharm Samabhav. It says that 1973 Keshwaran Bharati's judgment stated that secularism is a basic feature of Indian Constitution, but we do not have European form of secularism. European secularism was a negative secularism. European secularism was church will be only in religious sphere, and other spheres will be governed by the governments. So church, you basically put yourself narrowly in the religious sphere. You don't disturb our administration, our rule. Here the governments or they will govern. So church in religious sphere and the Raja or the government in the political administrative sphere. But we never had that problem. There was never a church here which controlled everything, and science, administration, development had to rebel and come out of it. Here we always had dharma. Dharma means it was basically what was stated in Shurur Mat case, that dharma is not same as religion. This is the judgment quotes. Dharma is always basically the moral values, the ethics which regulate our lives. And religion is the relation between me and my God, and observed with a number of religious practices. So in India, we never had dharma nirpekshta. We always had panth nirpekshta. So this judgment stated beautifully that Indian secularism is a positive secularism. Ye panth ko dharm ko kharij nahi karta. It says that we will not discriminate on the basis of religion. State does not have a religion. It is not a religious state, but we respect and care for all the religions. So judgment says that Indian secularism oscillates between Sarv Dharm Sambhav and Panth Nirpekshta. And thereafter it goes on to say Article 51AE, that's fundamental duty of every citizen to promote harmony and brotherhood amongst all, to renounce practices derogatory to women. Thereafter, the judgment comes straight away to Article 25. Now, Article 25, I've seen so many girls, 12-year, 13-year, 14-year girls having press conference in favor of hijab and saying, we have the right to freedom of religion. But I would have been so happy if Campus Law Center and other law center students would have taught them the entire Article 25, that is freedom of religion. Article 25, we all must read. This constitution is a beautifully drawn doctrine. We refer to it every day, but we must read it every day also. Maybe one article, two articles, but we must read it like we read any other novel. This rules our country. It rules more than 130 crore people. It's a beautiful living document. So Article 25 says right to religion. And what is that? It starts by saying subject to public order, morality and health, and to other provisions of this part, that is all other fundamental rights, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice, and propagate religion. That is, I have freedom of religion, ma'am. I'm learning from you, ma'am, that I have freedom of religion, but it is subject to public order, morality, and health. Second, I have freedom of religion, but I only have freedom of religion if I have
adhered and compliant to all other fundamental rights. That is, I have adhered to right to equality, right to liberty, right to dignity. यानी मेरे को मेरे धर्म का पालन करने का अधिकार है, तब है जब मैं समानता देती हूँ, गरिमापूर्ण जीवन देती हूँ, स्वतंत्रता देती हूँ, सबको देती हूँ. Then only have right to freedom of religion, otherwise I don't have it. Right to freedom is an inferior right, qualified by so many ifs and buts. Right to equality, right to liberty, right to dignity. Article 14, 19, 21 is at a higher pedestal. Right to freedom of religion is at a lower pedestal. Why? If equality, liberty, and dignity is complied to, then only I have right to freedom, otherwise not. And Article 25(2) says that state can make laws regarding all the activities, social, political, economic, all the secular activities which govern a religion. मंदिर में प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद कितने का आएगा, किस दुकान से आएगा, या मंदिर के बाहर की सड़क बनेगी, उसका टेंडर कहाँ फ्लोट होगा. State has every right to make laws because these are not religious activities per se. पूजा कैसे होगी, भोग कैसे लगेगा, they may be essential religious practices. They may be religious activities. पर उनके आसपास जितनी भी secular activities होंगी, state has a right to interfere and make laws. Correct? 25(2) का B कहता है, the state has a right to make laws providing for social welfare and religious reformation. किसी भी religion को reform करने के लिए और public interest में state laws बना सकता है. यानी if there is any activity in any religion which discriminates against any caste, any gender, the women, state can always make laws. So it is a qualified right. It is not an absolute right. Now thereafter, the court talks about essential religious practices. What happens is we have so many religions in India. And in all the religions, there are thousands and thousands of religious practices. But all of them are not essential religious practices. So under Article 25, freedom of religion, only essential religious practices are protected, not all the practices. यानी किसी भी धर्म में जो धर्म का अभिन्न अंग है, जैसे इस्लाम में नमाज पढ़ना है, होली कुरान को पढ़ना है, या अजान है, या रोजे रखना है, these are, ये अभिन्न अंग है इस्लाम का. इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रेगुलेट नहीं करेगा उसको. They are intrinsic part. ये चेंज होंगी तो वो मजहब चेंज हो जाएगा. इनको मॉडिफाई करोगे तो इस्लाम मॉडिफाई हो जाएगा. इनको रिमूव करोगे तो उनका फंडामेंटल कैरेक्टर रिलीजन का चेंज हो जाएगा. तो ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे सिखों में है, सरदारों में है, जो 5 क कहा गए हैं. जब सिखिज्म की स्थापना हुई थी उस समय था कि केश है, कंघा है, कच्छ है, कृपाण है. ये सब चीजें हैं जो जब उस धर्म की स्थापना हुई थी उसी समय से है. ये धर्म का अभिन्न अंग है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता. बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है. तो दिस इज इन इफेक्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धर्म का अभिन्न अंग होते हैं. So all the religious practices are not essential religious practices. They are not protected by Article 25. They can be modified, they can be removed, they can be altered, addition, subtraction, सब चल सकता है. पर essential religious practices जो अभिन्न अंग है, जिसको चेंज करने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता. This was stated by the court in Acharya Jagdishwaranand Avadhuta's case also, and Indian Young Lawyers Association case also. Got it? So court says that, there are twin tests which are essential religious practices. Number one, which are essential and fundamental and
core beliefs of a religion. And number 2, any practice to be essential religious practice has to be compliant with the constitutional trinity. The word is constitutional trinity. You can call it constitutional morality also. Constitutional morality is संवैधानिक नैतिकता. And constitutional trinity is Article 14, equality, Article 19, liberty, Article 21, dignity. तो कोई भी प्रैक्टिस हो, किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो सिखिज्म में हो, बौद्धिज्म में हो, इस्लाम में हो, they have to undergo this twin tests. Number 1, वो प्रैक्टिस उस धर्म का, मजहब का अभिन्न अंग होनी चाहिए, essential religious practice, और उसको देखना चाहिए कि वो वायलेट नहीं करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी का, जो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के: समानता का अधिकार आर्टिकल 14, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 और गरिमापूर्ण जीवन डिग्निटी का अधिकार आर्टिकल 21. अब आगे आता है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ. मैं 2 मिनट में और इसको पूरा बताती हूं. आगे कोर्ट ने कहा कि अगर हमें देखना है कि इस्लाम का अभिन्न अंग हिजाब है कि नहीं है, आप क्या देखोगे? आप इस्लामिक लॉ देखोगे. इस्लामिक लॉ क्या है? प्राइमरीली होली कुरान है इस्लामिक लॉ, और होली कुरान को सप्लीमेंट करने के लिए है हदीस. होली कुरान होगी जो डिवाइन रेवल्यूशन होगी, हदीस होगी द लाइफ एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट, वो हो गए. उसके बाद इज्मा है जो ओपिनियंस होते हैं इंटेलेक्चुअल्स के, डिसाइपल्स के, वो हो गए. और कियास जो एनालिटिकल डिडक्शंस हैं वो हो गई. तो कुरानिक जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, कोर्ट कहती है वो है होली कुरान, हदीस, इज्मा और कियास. उसमें वो कहते हैं प्राइमरीली जो इस्लामिक लॉ है वो होली कुरान से आता है, और जो बाकी 3 है, हदीस है, इज्मा है और कियास है, वो सप्लीमेंट करते हैं होली कुरान को. तो जो होली कुरान में नहीं है तो ये कुछ कहते हैं तो आप होली कुरान को ही देखोगे, क्योंकि all these 3 things cannot say what is not there in holy Quran. All these 3 things they cannot say what is not there in holy Quran. So let us see holy Quran. अब है होली कुरान बहुत से लोगों ने लिखी है, तो किस वर्जन को देखा जाए? तो सभी ने एग्री किया कि जो होली कुरान लिखी है अब्दुल्ला यूसुफ अली जी ने, टेक्स्ट ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री बाय अब्दुल्ला यूसुफ अली जी, उनको देखा जाए. जो ट्रिपल तलाक की जजमेंट आई थी शायरा बानो की, सुप्रीम कोर्ट ने भी सबकी रजामंदी से, कंसेंट से यूसुफ अली जी की ही होली कुरान को देखा था, वहीं से कोट किया था. यहां भी वही होली कुरान को लिया गया और सबने इसको एग्री किया कि हाँ हम इसको देखेंगे. उसमें बहुत ही सुंदर एक बताया, जो एक चैप्टर 2 और वर्स 256 है कुरान की. उसे प्रॉफिट साहब क्या कहते हैं? Let there be no compulsion in religion. रिलीजन में, मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. ब्यूटीफुल लाइन जहां से कोर्ट शुरू करती है कहना. और फिर कोर्ट कहती है इस हिजाब इस्लाम स्पेसिफिक? तो होली कुरान कहती है कि वेयरिंग हिजाब, दैट इज इट इज द मेन एंड women should dress modestly. The women should cover their bosoms. All these things are recommendatory. डायरेक्टरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. यानी होली कुरान ने वेयरिंग ऑफ वील और हिजाब इसको रिकमेंडेटरी बताया है. और कहा है, जो फुटनोट्स में यूसुफ अली जी कहते हैं कि उस समय जो मदीना की सोशल कल्चरल कंडीशंस थी, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले भी वहां पर जो होली कुरान में कहा गया है कि प्री इस्लामिक टाइम्स वर कॉल्ड जाहिलिया. जो प्री इस्लामिक टाइम्स थे उनको कहते थे बारबेरिक टाइम्स थे. विमेन वर मोलेस्टेड, विमेन वर सेक्सुअली अब्यूज्ड. तो उस समय जो सोशल और कल्चरल कंडीशंस वहां पर थी, उसमें कहा गया कि जब घर से बाहर निकलना तो कवर करके निकलो ना, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए कवर करके निकलो. तो उस टाइम पर वो ठीक था, वो जायज था. लेकिन फिर फुटनोट्स में यूसुफ अली जी कहते हैं we must ask ourselves
Are these conditions present amongst us today? The answer is no. आज जो प्री इस्लामिक समाज जो था, इस्लाम के आने से पहले का जो समाज था, जो इलिटरेट था, जो बारबारिक था, जो वहां पर प्रेजेंट था, आज हिंदुस्तान में तो नहीं है। या रूल ऑफ लॉ है, या जुडिशरी है, या पुलिस है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिससे हम गवर्न होते हैं, या पुलिस प्रोटेक्ट करती है, कोर्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं। वो सोशल कल्चरल कंडीशंस आज नहीं है जो मदीना में उस समय एग्जिस्ट करती थी। तो होली कुरान ने कहा ये रिकमेंडेटरी है, ये रिकमेंड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे कि पहनो। दूसरी बात, उस समय जो पहनती थी, जो हिजाब या बुर्का पहनती थी, वो अमीर औरतें, एलीट पहनती थी। जो स्लेव थी, जो इफ आई कैन से प्रोस्टिट्यूट्स थी, जो अनचेस्ट थी, जिनका चरित्र अच्छा नहीं था, वो नहीं पहनती थी। यानी ये भी डिवाइड होता था, जो अच्छे घरों की हैं, अच्छे चरित्र के हैं, वो पहनते हैं। और ये फुटनोट्स में कहा गया है, जजमेंट में कहा है, और जो अनचास्ट थी, जो अच्छे चरित्र की नहीं थी, वो उस समय नहीं पहनती थी। पर ये उस समय के टाइम्स हैं। हाँ जी, हिंदुस्तान है, इट्स अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, इट इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कोर्ट सेज, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट सेज, so what is recommendatory in Quran cannot be compulsory in practice. Hence, hijab or veil is not essential religious practice. और कितने ही दसियों countries में तो either it has been restricted or it has been banned, and if you wear it तो penalty और punishment होती है वहां पर। और वहां भी तरक्की कर रहे हैं, खुश हैं। ऐसा तो नहीं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स चेंज हो गए हैं रिलीजन के, ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी बात, कोर्ट ने अपने सब सेक्शन 11 में डिस्कस किया है कि वेयरिंग ऑफ हिजाब इज इट अ मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज। मैं किसी भगवान को, मैं किसी ऊपर वाले को नहीं मानती, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं अपने अंदर जो अपने आप से बात करना चाहती हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा से बात करना चाहती हूँ, उसकी फ्रीडम मुझे है। मैं भगवान को ऊपर वाले को ना मानूं, उसकी फ्रीडम मुझे है। आर्टिकल 25 देता है, विच इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा की आवाज। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी परमिशन देता है, जो अंतरात्मा नहीं है, जो बाह्य रूप से मैं बिंदी लगाती हूँ, मैं टीका लगाती हूँ, मैं माला पहनती हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ, निकाब पहनती हूँ, कुछ भी पहनती हूँ, वो मेरा बाह्य है। सो मेरी अंतरात्मा के साथ मैं रहूं, उसकी परमिशन भी देता है। मैं बाह्य अपने अलग अलग सिंबल्स पहनूं रिलीजन के, उसकी फ्रीडम भी आर्टिकल 25 मुझे देता है। और जो बिजॉय इमैनुअल का केस था, वो तो यही था कि एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स जन गण मन अधिनायक जय है गा रहे थे, ये चुप रहे, ये खड़े हुए, रिस्पेक्टफुली खड़े हुए, लाइन में लगे, ये अपने स्कूल ड्रेस में आए थे बच्चे, स्कूल के बच्चे, पर इन्हें गाने से मना कर दिया, चुप रहे, इन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमारा धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, विटनेसेस ऑफ जेहोवा, हमें कहता है कि हम किसी भी कंट्री का सॉन्ग नहीं गा सकते। तो कोर्ट्स ने कहा फाइन, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी, दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, दे हैव राइट टू बी साइलेंट। सो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 इनको राइट टू बी साइलेंट का भी एक राइट देता है। ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात थी। और आखिरी बात कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट करता है? आंसर वाज नो। पहली बात, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। होली कुरान कहता है पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। और उस समय की जो समय था मदीना में, वो ऐसे थे कि सिक्योरिटी के लिए पहनना पड़ता था। चास्ट विमेन पहनती थी, अमीर विमेन पहनती थी, बाकी लोग नहीं पहनते थे। तो इसलिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ये नहीं है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिनिटी है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, लिबर्टी और गरिमापूर्ण जीवन, उसके साथ भी ये मेल नहीं खा रही है, इसलिए एसेंशियल नहीं है। और हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं। क्लासरूम तो सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, आपको घर में पहनना है पहनिए, जब आप पूजा कर रहे हैं आप पहनिए, आपकी इच्छा है, आपके और आपके ईश्वर के बीच की बात है। पर आप जब सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, स्टेट फंडेड, आप स्कूल में क्लासरूम में आ रहे हैं, 35 साल से तो नहीं पहन रहे थे, सडनली क्या हो गया? और कोर्ट ने क्या कहा
There seems to be an unforeseen hand behind it. कोर्ट ने कहा ये उडुपी है, उडुपी कर्नाटका में है जहां 8 मठ हैं। यहाँ जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हिंदू और मुस्लिम सब साथ में भाग लेते हैं। सडनली क्या हो गया 1 जनवरी से कि 6 लड़कियां आ गई, हमें तो पहनना है, और पूरे कर्नाटका में धारा 144 लगाना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। तो ये अनफोर्सीन हैंड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके खिलाफ FIR लॉन्च हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमें आशा है कि जल्दी ही इसका कोई निर्णय निकलेगा। तो ये कहकर कोर्ट ने अपनी बात खत्म की। हमारे चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंबेडकर जी, उनको कोट करते हुए कोर्ट ने अपने 17th सबसेक्शन में जजमेंट में लिखा कि अंबेडकर जी इन पाकिस्तान or the partition of India stated that women can't even go, that the Muslim women can't even go to a mosque and pray. They have to wear burqa wherever she has to go out. These burqa wearing women on the streets are most hideous sights one witnesses in India. This is Ambedkar ji speaking. They're secluded from the outside world. They engage their minds in petty family disputes, quarrels at home. They become narrow and restrictive in outlook. They can't even take part in outdoor activity. They have slavish mentality and inferiority complex. Parda and burqa women are helpless and timid. Parda is a serious problem. It leads to segregation of women. It is against equal opportunity, equal participation, and it's against positive secularism. This was what Ambedkar ji stated. तो ये कह के जजमेंट फिनिश हो जाती है। थैंक यू एंड ओवर टू यू विजय। Thank you, ma'am. Thank you so much for comprehensively laying out the essence of the judgment. Although I've read it myself, but you explained it after your explanation, I have a better understanding of the judgment. Thank you so much, ma'am. अब मैं अब सवाल मौलाना साहब के लिए रखना चाहूँगी। मौलाना साहब, कर्नाटका के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं की तालीम पर क्या असर होगा? क्या उनके लिए तालीम पाना आसान होगा या मुश्किल, खास करके उन महिलाओं के लिए जिनके वालिदैन बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं? मौलाना साहब, आपका माइक्रोफोन आप ऑन कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। सभी दर्शकों को और सभी गेस्ट को मेरा आदाब। आज का जो मौजू है हिजाब, जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है और तमाम पैनलिस्ट भी जो हैं बहुत ही अहम हैं। मोनिका जी हैं, जज साहब हैं, सीमा जी हैं, अदर लोग जो मौजूद हैं, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट कि जिसने इस अहम मौके पर ये अहम डिस्कस रखा, और ताकि देश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी तक, तमाम इदारों तक सही बात पहुँचे। इस्लाम क्या चाहता है, देश को क्या ज़रूरत है, कौन लोग इसके ज़रिए देश में उन्माद मचाना चाहते हैं, कौन लोग हिजाब या कट्टरपंथी चीज़ों के ज़रिए इस्लाम की हकीकत को लोगों से दूर करना चाहते हैं और इस्लाम को एक कट्टरपंथी मज़हब बनाकर टकराव का माहौल बनाना चाहते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बहुत देर से गुफ्तगू हो रही है। मोनिका जी ने तमाम कानूनी पहलू रखे और जज साहब मौजूद हैं, इकबाल साहब। मैं तो जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये तमाम पिछले 2 महीने के जो हालात हैं इनको देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि हमारे देश के अंदर एक वो नस्ल जो 18 और 20 और 25 साल के बीच में अपना करियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर होती है, उसको कहीं ना कहीं मजहबी रंग देकर और मजहबी जुनून पैदा करके देश के अंदर गिरयुद्ध के जैसे हालात पैदा करने के लिए कई संगठन और कई तंजीमें और कई नौजवान इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से उडुपी के अंदर जो हालात पैदा हुए, उसमें उस लड़की का हिजाब पहन कर नारे लगाना और उन लड़कों का कॉलेज के बाहर लड़की को रोकना, ये दोनों ही गैर अखलाकी और भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। अपने मजहब का इस्तेमाल जो है इस तरीके की चीज़ों के लिए करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और जो है भारतीय तहजीब, इंडियन कल्चर के भी खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो चीज़ लाजिम और ज़रूरी है
उनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ें हैं जो बुनियाद इस्लाम हैं, जिनके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि जो ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो गैर ज़रूरी हैं। उनको आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसे नमाज होती है, नमाज 5 वक्त की है। हम सुबह को 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अगर हम उसमें 2 और बढ़ा देंगे तो अच्छा है, अगर 2 ही पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। और हिजाब का जो मैटर है, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर और पूरे इस्लाम के अंदर हिजाब की कोई बाकायदा सूरत हाल मौजूद नहीं है। अलग अलग कल्चर के लोगों ने, दुनिया के अलग अलग तहजीबों ने, अलग अलग मुल्कों के लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को हिजाब कहना शुरू कर दिया। भारत के अंदर लोग बुर्का ओढ़ते हैं। पहले 50-100 साल पहले वो जो अफगानी बुर्का हुआ करता था वो ओढ़ा जाता था, जिसमें 5-5 औरतें एक साथ आ जाया करती थी। अफगानिस्तान के अंदर अलग तरीके से ओढ़ते हैं। तो बहरहाल ये कि ये इस्लाम का लाजमी और ज़रूरी हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब हिजाब का या पर्दे का हुक्म दिया गया कुरान के अंदर, वो जो था नबी पाक के घर की औरतों के लिए दिया गया था, क्योंकि वो एक नबी मैसेंजर के घर की फैमिली थी, उनके लिए हुक्म दिया गया था। जो लोग उसे मानना चाहें, उस पर अमल करना चाहें, वो कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो उनके लिए भी खुली छूट है। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। और रहा मसला हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर ये पिछले 4 सालों से या 10 सालों से आया है हिजाब का, इससे पहले भारत के अंदर कोई नहीं था। आज भी देश के जितने मुख्य उलमा हैं, पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, देवबंद, बरेली, अहले हदीस और तमाम मुख्य धाराओं के जो लोग हैं, उनकी फैमिली की औरतें भी इस किस्म का हिजाब नहीं करती हैं जिस किस्म के हिजाब के लिए हमारे स्कूलों की लड़कियों को लड़ाया जा रहा है और सड़कों पर लाया जा रहा है। क्योंकि भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, सब धर्म एक दूसरे के धर्मों का एहतराम करते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर तमाम मजहबों को रहने का, बाकायदा अपने मजहबी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसी वजह से अब तक साल से भारत के अंदर इस किस्म के हालात नहीं हुए थे। अब ये ताकतें, जिसमें विदेशी ताकतें भी हैं और देश की इंटरनल ताकतें भी हैं, वो चाहती हैं कि कई हिंदू नौजवानों को वरगलाकर बहकाकर उनको सड़कों पर लाया जाए, कई मुस्लिम नौजवानों को और बच्चियों को लाया जाए। इसलिए देश के दोनों समुदाय के नौजवान तबकों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को, जरूरी है कि अपना ध्यान व तालीम के अंदर लगाएं। इस किस्म के मुद्दों पर अपना टाइम न लगाएं, क्योंकि वो इनको तालीम से दूर करने के लिए, देश की एकता, अखंडता को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के अंदर उनकी जो भूमिका बनने वाली है उससे दूर करने के लिए ये साजिशों का एक नतीजा है। मेरा ये मानना है कि लड़ाई हो तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हो, और जो कि भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर सबको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। यही वजह है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है भारत की, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊपर है। आज सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, या वो इस्लामी ममालिक, या हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, वहां भी अगर आज तारीफ होती है तो भारत की डेमोक्रेसी की होती है। ऐसे लोग ऐसे मुद्दों को लाकर तालीमी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के अंदर इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और मेरी गुजारिश उन नौजवानों से भी है जो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं और इस किस्म की चीजों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो है हंगामा करके नया जो है देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इस्लाम में जो जरूरी चीजें हैं वो तमाम की तमाम मौजूद हैं, और इस्लाम के अंदर जबरदस्ती किसी को नहीं है। जो चाहे जिस तरीके से रहे, और कहा गया है कि इस्लाम में हर जगह यही कहा गया है, कुरान में भी, हदीस में भी, इज्मा में भी, कयास में भी, कि जबरदस्ती किसी को नहीं है। इसलिए हिजाब की जो शक्ल आज पैदा की जा रही है, जो बनाई जा रही है, बुर्का हिजाब है या स्कार्फ हिजाब है या पूरा अपने आप को ढांप लेना हिजाब है, आज तक इस बात को भी वजाहत से साबित नहीं किया जा सका है। इसलिए जो चाहे हिजाब पहने, जो अपने घर में, मोहल्ले में, मार्केट में पहने, कोई को नहीं रोकता, मगर कम से कम जो स्कूल की ड्रेस है, ड्रेस कोड है, उसको हम सबको मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और वो लोग
जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारा बुनियादी हक है और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनको ये मालूम नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर जो है सभी लोगों को हर किस्म के हुकूक मिलते हैं। आज सऊदी अरब, कुवैत और दुबई के अंदर आप जाएंगे तो वहां जो है, जो पुलिस के अंदर, फोर्स के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, वो भी हिजाब नहीं पहनती है, जबकि वहां बड़े बड़े उलमा भी हैं, मुफ्ती भी हैं, आज तक उन्होंने उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया, और यहाँ के मौलवी मौलाना बड़े बड़े फतवे दे रहे हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि ऐसी जिद्दों की वजह से, ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से हम भारत के अंदर अलग थलग पड़ जाएंगे और इस्लाम को भी बदनाम करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को टकराव के माहौल के अंदर क्या तालीम हम देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने सेमिनार किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि ये इस किस्म के सेमिनार, इस किस्म के सिंपोजियम पूरे देश के अंदर हो, और देश के अंदर जो दूरियां पैदा करने की साजिशें हो रही हैं उनको हम रोकें और राष्ट्र निर्माण के अंदर बच्चों की भूमिका निभाएं, ताकि वो बच्चे जो 20 साल की उम्र में अपना भविष्य तलाश करते हैं वो मजहबी जुनून में रेडिकलाइजेशन की तरफ न बढ़ के राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएं। Shukriya, Kasmi sir. So the next question is to Justice Ansari. It will be asked by Ayush Rai. Ayush, you can take over. Yes, thank you, Vijay. Good evening, sir. The Indian Constitution postulates a separation between a secular domain regulated by the state and a religious domain in which it must not interfere. However, courts of law are regularly called upon to resolve a multiplicity of issues related to religion, and their decisions may have a far-reaching impact on religious conceptions and practices. Therefore, my question is, taking into consideration the hijab controversy, how far can the judiciary actually go in that limited sphere of adjudication in case of these religious matters? Thank you, sir. Any controversy or dispute which arises in India has to be ultimately resolved by the court. On that, there cannot be any doubt. However, the fact is that as far as the essential religious practice is concerned, that itself is a subject of consideration before a larger bench. This is not the final judgment. A judgment has been given, or there are quite a few judgments which say that those which are essential practices, there cannot be any curb, there cannot be any restrictions, but otherwise, the state can regulate those features, those practices. So there, same as Sabrimala case, the matter is pending. And most probably this matter will also be tagged along with those matters for the purpose of a decision as to whether wearing of hijab is or is not a religious practice, depending upon what transpires. What we have to understand in the case of this hijab controversy is that there is a recommendation, as Ms. Monica has also said, in the Quran, saying that you cover yourself modestly, particularly the bosom of a woman. Now, if there is a recommendation in Quran and somebody follows it, for him it will become, for him or her, it will become an essential religious practice. And it will not be proper to interfere with that by saying that it is not compulsory. It is not to say, for instance, we have 5 times namaz, and in 5 times namaz, there are, we call it rakat, 2 rakats, 12 rakats. In the Isha namaz, that is at night, it is 17 rakats. You can say 4. You may not say, need not necessarily say all. But if you want to say all, can anybody stop by saying that no, rest are only recommended?
We are all accepting that namaz is an essential practice of Islam. So if namaz is an essential practice of Islam, then the complete does not mean truncated namaz. It means the whole namaz is an essential practice of Islam, and in that event it cannot be stopped. I do not know what has been the argument in Karnataka High Court except what we have derived from the judgment itself. But the fact of the matter is that if it is not an essential practice of religion, then in that event there can be, as I have said in the beginning itself, there can be curbs prescribed and nobody can object to it. If we assume for a moment that it is not an essential practice, then the state can very well regulate. Secondly, state can also very well regulate or prescribe the dress code for school. So if the state has prescribed the dress code for school, it will be for the students ordinarily to comply with the dress code prescribed by the state. And if somebody wants to show that no, it is not possible to adhere to the prescribed dress, then in that event that person will have to prove it. It is also an important issue, particularly in the context of this hijab practice, is that supposing, for instance, prasad which is distributed after puja, can the state insist that it should be from such and such particular place that the sweets are to be brought? The state cannot. There will be multiple questions which will be involved, including the right of the person who has opened the sweetmeat shop to sell the sweets. He also has a right. That will be a difficult, but as far as this controversy is concerned, the controversy is something which will be resolved in course of time, I am sure, by the Supreme Court. Whichever way it decides, if it decides that hijab is not an essential part of Islam, primarily hijab appears to be not a necessary part of Islam. We have to, of course, understand that whether it is essential or it is not essential is basically not for a practicing Muslim to say. Say, for instance, in the case of beard, some people keep beard, some people do not keep beard. But those who keep beard, they can't be told that no, you can't keep beard. It is not an essential practice of Islam. That is the problem which we will be facing in a country like India, where there are multiple choices by people, and all choices cannot be curbed in such a manner that a uniformity arises. In any case, as far as the present subject is concerned, I have made it very clear that so long as hijab is not an essential feature or essential practice of Islamic religion or Islam, there is no impediment in the state prescribing the dress code. And in that event, it will be for the students to abide by or comply with the practice dress code which has been prescribed by the state. Thank you.
Thank you, Justice Ansari. The next question perhaps builds on the contentions raised by Ayush. I request Sharath Negi with the next question for Monica ma'am. Very good evening to everyone. Ma'am, in the now dismissed appeal against the hijab ban in the Karnataka High Court, the petitioners had contended that the hijab is an essential religious practice under Islamic law. So, since the matter is now in appeal in the Honorable Supreme Court, and if the court goes on to decide in favor of the said contention, don't you think it would bound all Muslim women to follow the particular dress code, which would in return violate the freedom of those Muslim women who choose not to wear the hijab? And adding on to that, what according to you could be a possible solution to this conundrum? What was the last line you stated? Ma'am, and what according to you could be a possible solution to the conundrum? I don't see this as any kind of chaos. Reason being that the law is absolutely clear on this. Law says, as Karnataka High Court has also reiterated, that first essential religious practices is what is protected under Article 25. But if essential religious practice is also discriminatory and against the constitutional scheme, even that can be modified. That can be regulated in favor of social reform and public interest. Because in 1947, if you see, when India got independent and India got partitioned as well, there were two countries which were formed out of India. One was Pakistan and one was Bangladesh, which was named later on as Bangladesh. Both the countries chose Islamic constitution. They became Islamic Rashtras. We chose secularism. Positive secularism, 𝗟𝗏𝗾𝐿. So we chose not the rule of a religious book or Sharia. We chose constitution as one book which will govern us all. And when the preamble of the constitution says, we the people of India give ourselves this constitution. So when we say we the people of India, it doesn't say we Muslims of India, we Hindus of India, we Christians of India, we Zoroastrians of India, Sikhs of India. No, it says all identities are subservient to one dominant identity that we are Indians first. So it says we the people of India give to ourselves this constitution. And what kind of constitution do we give to ourselves, which believes and ensures equality for all, non-discrimination, liberty for all, justice for all, dignified livelihood for all? Yes, this is the preamble. And same when Article 1 says India, that is Bharat. So this civilization is such which believes in 𝗟𝗏𝗾𝐿, that is equal treatment of all the religions. So in 1947 and thereafter the constitution was formed in 1950, we chose the constitution as the only holy book above all the other books. So any kind of religious diktat cannot work against the Constitution of India, which gives 𝗏𝗵𝗆 𝐺𝒱𝒻, dignified life for all. Now, your question was that appeal which has been filed in Supreme Court. This appeal is primarily on two grounds. If you see, because I was in Karnataka High Court online throughout all these days, and from 2:15 to 2:30 they used to go up till 4:30 or 5 o'clock also sometimes. I listened to all the pleadings, all the arguments, and thereafter the judgment. They basically pleaded that hijab is essential religious practice in Islam and hence protected under Article 25. Karnataka High Court very plainly dismantled that thing. It said it is not compulsorily recommended. It is not compulsory in Quran. What is not compulsory in Quran cannot be compulsory in practice. Now, second, which was never pleaded and never argued properly, the ground for which they have come to Supreme Court now. No. Wearing hijab is my freedom of expression under Article
19 of the Constitution. Freedom of express करती हूँ अपने आप को हिजाब पहन कर. But again, that is regulated under 19(2), reasonable restrictions. Yes. The second ground which they have played before Supreme Court, they haven't spoken as yet. It was just, in the drafting, the pleadings it is, before Supreme Court, that it is my right to privacy under Article 21. The right to privacy was never pleaded before Karnataka High Court. And right to privacy, if you see Puttaswamy's judgment, now privacy is, it is not in public privacy. Privacy is regarding the matters of your family, marriage, procreation, or sexual orientation. And privacy is not absolute. It has reasonable restrictions to it. I don't know how they're pleading this ground, or they're just positioning themselves. So both these grounds, now they are saying hijab before Supreme Court, they are saying it is my right to privacy and my right to expression. They say it's my right to conscience. Conscience होती है अंतरात्मा. आप तिलक लगाते हो, आप रुद्राक्ष पहनते हो, आप बुर्का हिजाब पहनते हो, वो conscience नहीं होगा. They are express symbols of your freedom of religion. You understand that? So 3 grounds which they are taking there, they never took it properly in their pleadings. You see what Karnataka High Court says. Karnataka High Court Constitutional Bench says freedom of conscience never pleaded. ये बातें कुछ प्लीड नहीं की, एक वर्ड नहीं है इसके बारे में, जो नई बातें कोर्ट में ला रहे हैं. तो ये चीज इसमें. And I am expecting that it is not only essential religious practice which is protected. The constitutional trinity has to be adhered to. That is equality, liberty, dignified life. And this is the age in which I think if you see otherwise, if you see Afghan women, they are risking their lives and protesting against Taliban. We will not wear hijab. We will not wear burqa. We want to study. What is this? अलग कर रहे हो, लड़कों के स्कूल अलग, लड़कियों के स्कूल अलग, हायर एजुकेशन हमें नहीं होगी, आदमी के बिना बाहर नहीं जा सकते. We will go. This is my autonomy. It's my independence, So world over, if the women are saying that we want to be free, हम तो चांद पर पहुंचना चाहते हैं. ये 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां, do they actually have choice? You have this beautiful topic, liberty of choice and choice of liberty. 14 साल की लड़की कहेगी मुझे बुर्का ही पहनना है, उसको चुनने का अधिकार है, चॉइस का अधिकार है, पर क्या वो चुन रही है, क्या उसके पेरेंट्स इंपोज कर रहे हैं उसके ऊपर? तो as Ambedkar ji said, who is the chief architect, who's the god of our constitution, as he said that these are symbols of slavery. आप जो religious institutions है वहां पहनो ना, religious practices जो करनी है वहां पहनो ना, कौन रोक रहा है? पर secular institution है, वहां क्यों दिखाते हो कि अगर 10 लड़कियां बैठी हैं 9th में, 10th में, 11th क्लास में, क्यों अंतर करना? कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन किस कास्ट को बिलोंग करता है? वो फुटबॉल खेलेंगी तो साथ खेलेंगी ना, वो बास्केटबॉल खेलेंगी साथ खेलेंगी, वो पढ़ेंगी तो साथ पढ़ेंगी, वो डॉक्टर बनना चाहेंगे साथ बनेंगी. Why do you differentiate? Or uniformity in the sense they should belong to that institution. अमीर गरीब का भेद हटना चाहिए, इसलिए ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया जाता है. Thank you. Thank you so much for your valuable insights, ma'am. थैंक यू मैम. हमारा अगला क्वेश्चन मौलाना साहब के लिए है. मौलाना साहब सेकंड ईयर की शिशिर हैं जो आपके लिए क्वेश्चन रखना चाहेंगे. शिशिर. नमस्कार मौलाना जी. हालांकि आपने मेरे प्रश्न का कुछ हद तक जवाब पहले दिया है, इस पे थोड़ा और स्पष्टीकरण के लिए मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पवित्र कुरान और हदीस में हिजाब के विषय में कुछ स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि मेरी समझ जो है पवित्र कुरान जो शब्द का प्रयोग करती है वो खिमार है, ना कि हिजाब, जो मात्र एक प्रकार की ओढ़नी जो उस वक्त की महिलाएं प्रयोग किया करती थी. और हिजाब की जो समझ अभी है एक प्रकार का अवरोध है जो कि मुस्लिम महिलाओं और बाहरी दुनिया के बीच में होता है. तो इन शब्दों के बीच में अंतर क्या है, हिजाब और खिमार का अंतर क्या है, और ये बदलाव समय के साथ कैसे आया और इसका महत्व क्या है? दूसरा, मौलाना जी, अगर मेरी समझ सही है तो पवित्र कुरान न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी सभी कपड़े पहनने की सलाह देती है. तो इस पे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं.
अगर हाँ, तो फिर हमारा सारा ध्यान सिर्फ हिजाब पर केंद्रित क्यों रहता है और बाकी पुरुषों के संबंधित कपड़ों पे भी क्यों नहीं जाता है? शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो हिजाब है, जहाँ जिक्र किया गया है पर्दे का, तो वहां पर्दे को जो बयान किया गया है वो शर्म के उसमें किया गया। जैसे भारत में कहते हैं ना कि अपने अंदर शर्म और लज्जा रखे, तो जितनी शर्म औरत को रखनी है इतनी ही शर्म मर्द को भी रखनी है। इस्लाम के अंदर दोनों के लिए एक ही हुक्म है, एक ही अल्फाज हैं कि आप अपनी निगाहों को झुका कर रखें। इसका मतलब ये है कि अपनी निगाहों से ऐसी हरकतें ना करें कि जो कि शर्म को ख़त्म करने वाली हो। हम किसी के घर में जाते हैं, वहाँ जाकर अलग तरीके से देखना, यानी कि ताड़ने वाली निगाहों से, मैं माफ़ करो दिल्ली वाली लैंग्वेज में कहते हैं ताड़ने वाली निगाह, ताड़ने वाली निगाहों को हिजाब कहा गया है इस्लाम के अंदर। और मर्दों के लिए भी ये हुक्म है, औरतों के लिए भी ये हुक्म है। इसके अलावा जो ओढ़नी है, जो चादर है, वो अपनी अपनी सभ्यता है। वो अरब का एक कल्चर था, आज भी वहां पर औरतें पहनती हैं। अरब में लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, अरब के अंदर लड़कियां जो है वो अबाया भी पहनती हैं। भारत में हमारे यहाँ लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, शलवार कमीज भी पहनती हैं और साड़ी भी पहनती हैं। मल्टी कल्चरल मजहब है इस्लाम। इस्लाम बड़ा फ्लेक्सिबल मजहब है। इसको कट्टर और जो है इसको इतना सख्त बनाना, इसके लिए जगह जगह इस्लाम में मना लिखा है कि इस्लाम जो है वो कोई चीज थोपता नहीं है। भारत के अंदर आज जो दिक्कतें हैं वो यही है कि इन्होंने ना तो इस्लाम को समझा, ना भारतीय संस्कृति को समझा, ना भारतीय सभ्यता को समझा। इन्होंने सिर्फ हर 10 साल में नई आइडियोलॉजी समझी। 10 साल पहले जो आज हिजाब लड़कियां पहन के स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं, 10 साल पहले मैंने हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं देखा। ये नया नया कल्चर है, ये नया नया स्कार्फ है जो आया है और जो है बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, 5-5 साल की बच्चियों को पहनाया जा रहा है। ये एक वो सोच है जो भारतीय संस्कृति को खत्म कर देना चाहती है और बच्चों की जो मासूमियत है उसको भी खत्म कर देना चाहती है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि बच्चे की मासूमियत आप खत्म कर दें। और दूसरी बात कि जो कानून है, अगर भारत का कानून हमें इक्वलिटी देता है और फंडामेंटल राइट्स देता है, तो वो ये भी देता है कि हर स्कूल को, हर कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड बनाने का अधिकार है। इसलिए कानूनों का उल्लंघन, इस्लाम ये भी कहता है जो कानून बन जाए आपके मुल्क का, उसका उल्लंघन आप ना करें। इस्लाम के अंदर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को मानना भी फर्ज है, जरूरी है। इसलिए जो आज हमारे मुल्क के अंदर कभी सीए के नाम पर भीड़ लगा देते हैं, कभी जो है किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, 3 महीने सीए आंदोलन पर ये लोग बैठे रहे। वो ये वही ताकतें थी जो इन आंदोलनों के पीछे थी। आज वो आंदोलन चेंज करके हिजाब आंदोलन पे आ गई है। इसलिए मेरी देश के बच्चों से, देश के मासूम लोगों से और उन तमाम हिंदू भाइयों से भी अपील है कि ऐसे मुद्दों को जो है आप लोग भी इग्नोर करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चियां जो आज बड़ी तादाद में स्कूल जाना शुरू हो गई हैं वो वहां से रुक जाएं। इसलिए जिम्मेदारी हमारी सभी समुदाय के लोगों की बनती है कि मुस्लिम कौम के अंदर, जो खासतौर बच्चों के अंदर एक उज्ज्वल आ रही है और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की जो भावना पैदा हुई है उसको हम आगे बढ़ाएं। और जहां जहां इस किस्म के लोग जो है दंगा या उद्भव पैदा करना चाहते हैं उनको नजर में रखें। Shukriya, Kasmi sir. The next question is for Justice Ansari. It's coming from Adarsh. Thank you, Vijay. My question to you, sir, is in the case of hijab, an observant Muslim woman might insist that the verses from chapter 33 and 24 of Holy Quran mandate her to keep her head covered. However, when we look at Justice R.F. Nariman's dictum in the Sabrimala review judgment, we see that Honorable Justice, while upholding the rule of law, held that the only holy book is Constitution of India. Keeping both views in mind, sir, my question is how the Supreme Court, as a guardian of Constitution, as well as upholder of citizens' rights and liberties, can harmoniously determine this clash between constitutional liberty on one hand and personal liberty on other hand. With due respect, one sentence of Justice Nariman
will not take away all the judgments which have been delivered on this subject. That there is religious practices in India, not of one religion, several. And there is a constitution of India. There cannot be any doubt about it. Because reason is very simple. Because there are some religious practices which are personal, known as personal law. And according to the constitution, according to the Supreme Court, the personal law is not a law within the meaning of Article 13, with the result that it cannot be regulated, it cannot be amended. That's the personal law, but we are not on the question of personal law. Our problem in this case is that unfortunately Karnataka High Court has dealt with the issue as if it is a civil suit. That so-and-so has pleaded this, he has not pleaded. You see, a constitutional interpretation arises even on the basis of a letter. So it is not that the pleading has to be there. That pleading is in constitutional matter. If it is something which has to do with the constitution, then it is for the court to decide. If a particular aspect has not been pleaded, does not mean that the decision will not be given. प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि ताकि हमारे मौलाना साहब को भी समझ में आए, वो ये है कि कुरान में रिकमेंडरी तो है पर्दा, और रिकमेंडरी है और कोई उसको मानता है तो उसका स्टेटस क्या होगा? जो रिकमेंड कुरान ने किया है और मैं उसको मानता हूँ तो मेरा स्टेटस क्या होगा? मेरा स्टेटस तो वो नहीं होगा ना जो उस आदमी का है या उस लड़के का या उस औरत का जो नहीं मानते हैं। ये जरूरी था, लेकिन ये डिसाइड वैसे भी नहीं कर सकते थे कर्नाटक हाई कोर्ट, क्योंकि ये तो डिसाइड होना होगा कि व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन, and if there is an essential if there is no essential practice of a religion, whether that practice can be dispensed away or do away with. This is what it is. Thank you, sir. Thank you, Justice Ansari, for the nuanced outtake. The next question builds on the same contention. I request Aman Singh Rawat the next question to Monica ma'am. Can I just clarify this? Actually, whatever Sir said, just adding something to it. Ma'am, perhaps you can, the question is very relevant and you can take it. Please. Yeah, Monica ma'am, my question is, in Sabrimala case, secular principles were applied over a religious place, whereas here secular principles are to be applied on a secular place. Hence, can the ratio of Sabrimala case be applicable in the hijab case? And yes, and if yes, then what differences will it bring to the judgment? Okay. See, okay. I have 5 minutes. I have time in this one. Okay. Now, if you see what were, always see the facts of a case and then we apply law on that matter. Facts of one case are different from the facts of the other case. So as lawyers, we always say, and judges tell us, master the facts and then apply the law. We must master the facts. Now, what was Sabrimala case? Sabrimala case was that there was a Lord 𝐴𝑖�प्𝑝𝑎 temple in Sabrimala, where the women from 10 years to 50 years of age, that is menstruating women, women in reproductive age, were not allowed. Women below 10 years of age, the girls were allowed. Above 50 years of age, the ladies were allowed. But this 10 to 50 years of age, women were not allowed. And why they were not allowed? It is said that Lord 𝐴𝑖�प्𝑝𝑎 is a brahmachari there. So he is there in celibate state of mind. So women of this reproductive age should not go there. This was challenged by a Delhi-based Indian Young Lawyers Association, a group of advocates, Delhi-based. They challenged it. And I think 5 judges bench judgment came, in which 4 male judges said, yes, this is violation of women's right of equality
of liberty, of dignity. And hence they allowed and permitted women to enter Sabrimala. The lone dissenting judgment was that of the lady judge. Lady judge was Justice Indu Malhotra. She said, because of the peculiar facts of this case, if women are not allowed in Sabrimala, it's okay. It does not violate Article 14, 19, and 21. Now, peculiar facts which were pleaded and which were not at that time pleaded, but before the review came up, which were there all over, social media, and new facts were pleaded in the review petition. The facts were that there are thousands and thousands of temples of Hindus. In all the temples, women are allowed. Obviously, we go to all temples as women. Of Lord Ayyappa also, there are more than 1,000 temples of Lord Ayyappa. In all the 1,000 temples, women are allowed. I myself went to a temple of Lord Ayyappa in Kerala and worshipped there. But there's only one temple out of these 1,000 Ayyappa temples in which the women are not allowed. Because Lord Ayyappa, he is in different avasthas in different temples. Somewhere he is a child, somewhere he is a married man, somewhere he is old, somewhere he is in alag avastha. But here in Sabrimala, he is in the avastha of brahmachari. And under Article 26, all the religious denominations have a right to regulate their temples. This was pleaded in the review also, and it was pleaded in the main case also, that Ayyappans, that is devotees of Lord Ayyappa, they form a separate religious denomination, and hence they have rights under Article 26 to regulate the entry into their temples. It was said that all the idols in Hindu temples, they are juristic persons. They can be taxed. They are living entities, as in Ayodhya judgment, Supreme Court held. They have their rights, and they have the right to privacy also. It is the abode of Lord Ayyappa, and he says in 999 temples you go, just one temple, in which there are rules and regulations for men also. The men coming there have to have 41 days of proper abstinence from all desires, from sexual activity, from pleasures. They have to sleep down, they can't dress properly, they have to grow their beard, etc., etc. So there are restrictions on men also, restrictions on women also. When all these things were pleaded during the case in Supreme Court, in social media, and in the review petition, all these things were pleaded that it is not about rights of women. They can go to 900 plus temples. It is about rights of the God in that avastha. And it was said that God in Hindu religion is a living entity and hence has rights. So looking at all these points, the court said, we'll refer it to a larger bench. In the review petition, the 5 judges with a majority judgment, they referred it to a 9 judges bench. And in 9 judges bench, they formulated a number of questions. There were, I think, about 7 questions formulated for consideration, chiefly aiming at, number 1, to what extent courts can interfere with the essential religious practices. Number 2, what about Article 26? How do you define constitutional morality? Then how do you define what is a religious denomination? Is Ayyappan a separate religious denomination and hence entitled to the protection of Article 26? So all these 7 questions were formulated. And उसमें है कोर्ट किस हद तक religions में interfere कर सकती है. Basically इसके फिर उसमें there were a number of petitions which were also referred to this larger bench. Petitions involving, number 1,
why Muslim women are not allowed in mosques. First writ petition. Second petition, the female genital mutilation among 𝗏𝗏𝗆s. There is a sect in which there is female genital mutilation. Third, in the Parsi women, when Parsi women marries a non-Parsi, she can't enter her fire temple. She can't enter the Parsis' temples. That petition. So a number of such petitions which touch upon the main root, how much court can interfere in the religions. So all these petitions have been clubbed together. Now one hearing took place, but thereafter Corona came and the hearing has not taken place. So that is the essence and the thing of Sabrimala case. Yes. Vijay? Thank you, ma'am, for such an insightful answer and for such a great comparative analysis. And okay, so before our next question, I just would like to announce that there is a Google form link in the description of the YouTube video. Whoever wants to submit their question may submit through that Google form. अभी अगला सवाल सूर्यांश का है जो मौलाना साहब वह आपसे पूछना चाहेंगे. नमस्ते मौलाना जी. जी ये माना जाता है कि अगर आप एक पौधे को जब वो शुरुआती दिनों में हो किसी झुकी हुई बाली या लकड़ी से बांध देते हैं तो वो बड़ा होके भी झुका हुआ ही रहता है. ऐसे ही अगर किसी बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में की जाए जिसमें उसे हिजाब ही सबसे बेहतर पसंद बताई जाएगी तो वो बच्ची हिजाब को ही बेहतर समझेगी. सवाल साहब ये है कि क्या वो बच्ची हिजाब को खुद से अपना रही है या उसे बचपन से तैयार किया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों के अंदर, भारत के अंदर कहीं पर भी 99% जो है ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा हो. 99% घरों के अंदर जो लड़कियां अपने आप पहनती हैं, 2 बहनें होती हैं, 2 पहनती हैं, एक पहनती है, एक नहीं पहनती. मगर पिछले कुछ दिनों से हिजाब के नाम पर जो ये पंगे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं और कहीं-कहीं स्कूलों के अंदर हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये गलत है. पूरे मुल्क में हमारे कहीं भी कोई जबरदस्ती नहीं है, ना कोई फैमिली, ना कोई उलमा, ना कोई जिम्मेदार लोग और ना हमारे मुआशरे के अंदर जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है. कुछ बच्चियां जो है जो हिजाब पहनती हैं, मर्जी से पहनती हैं और कुछ स्कूलों के अंदर जैसे छोटे-छोटे स्कूल हैं, उन्होंने 5वीं क्लास के अंदर जबरदस्ती उन्होंने जो है स्कार्फ रखा है. वो भी उनकी माँ बाप की चॉइस के ऊपर है. बहुत से माँ बाप ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमारी बच्ची चुनरी पहनेगी तो वो दुपट्टा ओढ़ के जाती हैं बच्चियां. कुछ ऐसी हैं जो बगैर दुपट्टे की भी जाती हैं. इसलिए मसला ये नहीं है कि वो हिजाब में परवरिश पाएंगी तो खराब हो जाएंगी या बर्बाद हो जाएंगी. मसला ये है कि मजहबी चीजों को सड़क पे लाकर उनके लिए लड़ना और उनके लिए उसको सब कुछ समझना कि यही मेरी जंग है. अगर वो लड़की गलत है जिसने वहां पर हिजाब पर आवाज उठाई और जो है नारे तकबीर लगाकर जो है स्कूल के अंदर सब कुछ किया तो वो लड़के कौन थे, वो किसके भेजे हुए थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिन्होंने जो उस लड़की को रास्ते में रोका. क्योंकि ड्रेस कोड जो था जब मालूमात की गई तो ड्रेस कोड जो है कॉलेज का है उसको लड़कियां अपनाती हैं और अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि जबरदस्ती किसी कॉलेज ने हिजाब उतरवाया हो या जबरदस्ती किसी कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर गई हो. वहां पे एक बाकायदा क्लॉक रूम होता है, वहां सब अपने बुरके या हिजाब या चुनरी जो भी चीजें होती है, चादर, वो उतार के रख देती हैं. क्लास के अंदर जो शरीक होती हैं लड़कियां वो तमाम की तमाम उसी ड्रेस में शरीक होती हैं, कॉमन ड्रेस जो सबकी है. इसलिए बहस ये है कि क्लास के अंदर हमें नुमाया नहीं होना है बल्कि जो ड्रेस कोड स्कूल का है उसी में शरीक होना है. और रहा मसला हिजाब का, हिजाब की अभी तक भारत के अंदर डेफिनेशन ही नहीं हो पाई कि हिजाब कहते किसे हैं. हिजाब बुरके को कहते हैं या हिजाब चोली को कहते हैं या हिजाब जो है उसे कहते हैं जो चादर पहनी जाती है या हिजाब जो है अबाया को कहते हैं. हमारे यहाँ जो बुरका पहना जाता है भारत में जिसमें बेल्ट लगी हुई होती है और जिस्म का एक एक हिस्सा नुमाया होता है उसे तो हिजाब नहीं कहते. पूरी दुनिया उसे मानती है कि वो हिजाब नहीं है. धन्यवाद मौलवी जी.
Shukriya Kasmi sir. The next question is by Arif for Justice Ansari. Hello, am I audible, sir? Yes, you're audible. Sir, the Karnataka government order on dress code for students purportedly issued under Section 133, read with Section 7, Clause 2 and 5 of the Karnataka Education Act 1983, provides that the students should compulsorily adhere to the dress code, and whenever no dress code is prescribed, such attire that would accord with equity and integrity and would not disrupt the public order. So to what extent is it justified? And even if the hijab, that is a piece of dress, disrupt public order, isn't it the task of the state to stop that disruption rather than banning that piece of cloth? Sir, kindly turn on your microphone. Mics. As far as prescribing the dress code is concerned, the state is within its right to prescribe dress because there is no impediment in the constitution debarring the state from prescribing the dress code. So the state can prescribe and the state has prescribed. Now, if somebody objects to the dress code on the ground that it hurts my essential religious practice, then in that event, that person will have to satisfy, yes, the practice which he or she is trying to adhere to is a religious practice, and the direction which has been issued by the government violates that. That's how it is. Thank you, Justice Ansari. The next question is by Saurabh from Monica Mama. It's on UCCA. Good evening, ma'am. First of all, thank you for giving me the opportunity. Ma'am, along with the hijab controversy, the demand of uniform civil code has also arisen. So I have two questions regarding it. The first one is, how much challenging would it be in a country like India to meet standards of uniform civil code? The second is, if uniform civil code does get implemented, will it affect essential guaranteed practices of Sikhism like wearing turban, which is enshrined as a fundamental right under Article 25? If not, then how can we harmonize uniform civil code and the essential religious practices? Okay. First of all, we already have uniform civil code in India. You only want uniform family code. We have uniform criminal law in India. We have uniform civil law in India. All we want is uniform family law. यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, मालूम है, कोई भी किसी का मर्डर करता है, कोई भी चीज चोरी करता है, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो कोर्ट विल नॉट सी हिज रिलीजन, वही सेम पनिशमेंट मिलेगी. वी हैव यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है. कोई किसी somebody enters into a contract, somebody enters into a contract for sale or purchase of property, you have uniform civil law. The court will not see their religion. They can sell and they can purchase a property, they can have their property on rent, they can enter into a contract, they can bid for a tender. Religion will not be seen. But we don't have a uniform family law. And only 4 things in that: the marriage laws, the divorce laws, the succession laws, and adoption laws. सिर्फ इन चारों में यूनिफॉर्मिटी लानी है, बाकी वी हैव यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर. किन चारों में? मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन. शादी हुई, शादी कैसे? उसके बाद डिवोर्स होगा, डिवोर्स कैसे होगा? बच्चा नहीं हुआ, बच्चा अडॉप्ट करना है, बच्चा अडॉप्ट कैसे होगा? और बच्चा हो गया तो अपने मरने के बाद बच्चे को हमारी संपत्ति कैसे मिलेगी? उसके उत्तराधिकार का, उसका सक्सेशन. केवल इन 4 चीजों में सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं. उनमें ऐसा लॉ लाना है कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है ना लेडीज के अगेंस्ट में, वो खत्म हो जाए. बस आप टर्बन पहनो, आप साड़ी पहनो, आप सूट पहनो, आप जीन्स पहनो, कोर्ट के पास टाइम नहीं है, वो इंटरफियर नहीं करेगा, ना इंक्लिनेशन इंटरफियर करने की. सिर्फ और सिर्फ एनी प्रैक्टिस इन एनी रिलीजन which is discriminatory against women, court wants to remove that practice.
दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, which says state shall endeavor to secure for all its citizens uniform civil code. But whenever you read Article 44, always read it with Article 37, because Article 37 says that all these directive principles, including uniform civil code, are mandatory, are fundamental in the governance of the country. The state, that is the government, has to abide by these principles in formulation of laws. तो कोई भी कानून सरकार बनाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको उसको इंप्लीमेंट करना ही होगा। अब अगर मैं 2 मिनट में अपनी बात बताऊं, हुआ क्या कि शुरू से आप देखें, मतलब अगर मैं कहूं 2000 साल से देखें, यहाँ पर जो वैदिक काल से अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल से यहाँ पर जो धर्मशास्त्र थे वही कानून थे, धर्मशास्त्र कानून थे। फिर शक आए, हूण आए, वो भारत में ही समा गए। फिर जब मुगल आए तो मुगलों की तलवार ही उनका कानून था। उसके बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब को लगा कि नहीं, यहाँ पर एक कानून होना चाहिए। तो उन्होंने दुनिया भर के लगभग 500 से अधिक मुस्लिम स्कॉलर्स को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि यू सिट फॉर इयर्स टुगेदर, आप बैठिए और आप यहाँ पर इस्लामिक कोड फॉर साउथ एशिया बनाइए। फॉर इयर्स टुगेदर these more than 500 Muslim scholars, they sat and they formulated an Islamic code of conduct for South Asia, जिसमें उसके 4 बेसिस थे। पहला उसका, जैसे मैंने कहा, कुरान बेसिस था, हदीस बेसिस था उसका, और जितने भी ओपिनियंस थे मुस्लिम स्कॉलर्स के वो बेसिस थे इसके। तो ये शरिया लॉ हम कहते हैं हिंदुस्तान में है, ये फतवा आलमगिरी जो इन्होंने मिलके ये लगभग 30 वॉल्यूम्स का इस्लामिक कोड फॉर साउथ एशिया बनाया औरंगजेब के टाइम पर। फतवा आलमगिरी यही कानून है हिंदुस्तान में, सिविल लॉ। लेकिन ये क्रिमिनल लॉ शरिया का नहीं लेके आ पाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ फ्रॉम द अरेबिक कंट्रीज इट वाज वेरी ब्रूटल। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। किसी विमेन का रेप हो जाए तो 4 मेल विटनेसेस चाहिए, वो प्रूव नहीं कर पाई तो एडल्ट्री कहकर कि उसने एडल्ट्रस रिलेशनशिप थे उसको मार दिया जाएगा, मार कर खत्म कर दिया जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ तो नहीं आया शरिया का, लेकिन ये फतवा आलमगिरी जो 500 मुस्लिम स्कॉलर्स ने सिविल लॉ बनाया, ये यहाँ हिंदुस्तान में लागू हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने कहा वी आर हियर टू जस्ट रूल, वी विल नॉट इंटरफियर इन एनीबॉडीज पर्सनल लॉ। ना हिंदू पर्सनल लॉ में, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में वी विल नॉट इंटरफियर। लेकिन हुआ क्या, ये जो हिंदू रिलीजन से आवाज आनी शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन राय खड़े हो गए, उन्होंने कहा, विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे, उनसे कहा कि ये सती एबोलिशन एक्ट लेकर आइए, सती को एबॉलिश कीजिए, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस हियर। तो सती एबोलिशन एक्ट आ गया 1856 के आसपास, सती एबोलिशन एक्ट आ गया। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं उन लड़कियों को कोई अधिकार नहीं रहता है, तो जो विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आओ। तब फिर गवर्नर जनरल से बात की, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया। उसके बाद शारदा एक्ट आ गया, देशमुक्त एक्ट आ गया, जिसमें लगातार हिंदू सोसाइटी से आवाज आई। वहां के रिफॉर्मर्स खड़े हुए, उन्होंने कहा ये एक्ट लेकर आओ, लड़कियों की जो एज है ये बढ़ाओ, मैरिज की एज। तो 14 से 18 की गई शारदा एक्ट में। उसके बाद हिंदू विडोज को और आप रिफॉर्म करके उनको और राइट्स दीजिए, लड़कों के बराबर राइट दीजिए। तो देशमुख एक्ट आया 1937। तो लगातार वहां समाज से आवाज आई, रिफॉर्मर्स खड़े हुए, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रिफॉर्म के एक्ट्स आते गए। लेकिन उसी समय ऐसा लगा, कुछ जो उस समय के मैं कह सकती हूँ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने कहा कि यहाँ सब रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस्लामिक लॉ है उसको भी चेंज कर देंगे। तो वो लोग खड़े हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर जोर डाला
और 1937 में शरीयत एक्ट पास कर दिया। 1937 में वो एक्ट क्या था? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। गूगल कीजिए, 3 पेजेस का एक्ट है, 3 पेजेस, 6 सेक्शंस का एक्ट है, 6 सेक्शंस। और सेक्शन 2 कहता है ऑल मुस्लिम्स शैल बी गवर्न्ड बाय शरीयत, दैट इज इट। क्या करोगे तो क्या पनिशमेंट होगी? कंपाउंडेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, अपील कहां जाएगी? कुछ नहीं। तो वो रेजिस्टेंस जो रही ना, दैट डू नॉट रिफॉर्म द इस्लामिक लॉ, वो रेजिस्टेंस लगातार आज तक बनी हुई है। यहां जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, he wanted reformation and having one law for the nation. He said we must have uniform civil code. But उस समय the first prime minister जो बने नेहरू जी, उन्होंने कहा the time is not ripe enough, क्योंकि उसी समय भारत आजाद हुआ था, उसी समय 2 देश बने थे, उस समय क्योस का माहौल था, सोशल हार्मनी इतनी ऐसे नहीं थी। He said time is not ripe. तो उस समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, और 1956 में आप देखिए हिंदू कोड बिल लाया गया। दे चेंज्ड हिंदू रिलीजन, दे रिफॉर्म्ड हिंदू रिलीजन, दे कोडिफाइड हिंदू रिलीजन, बट टच मी नॉट की पॉलिसी इस्लामिक लॉ में बनी रही। 1955 में इसेंशियल प्रैक्टिसेस भी हिंदू रिलीजन की चेंज की गई, जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप देखिए हिंदूज में जो मैरिज, इट वाज अ संस्कार। टुडे आल्सो 16 संस्कारों में से एक संस्कार, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज में, हिंदू रिलीजन में, यू कैन एंटर इनटू अ मैरिज, यू कुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ अ मैरिज। 7 जन्मों का संस्कार कहते हैं, वो था। लेकिन 1956 के हिंदू मैरिज एक्ट को जो चेंज किया गया, उसमें डाइवोर्स का प्रावधान लाया गया। डाइवोर्स वाज नेवर देयर। आप बताइए डाइवोर्स का हिंदी नाम बताइए। तलाक तो उर्दू नाम हो गया, इंग्लिश में डाइवोर्स हो गया, हिंदी नाम बताओ क्या है? देयर वाज नो डाइवोर्स। पहली बार 1956 में हिंदू रिलीजन में इसको चेंज किया गया, इसमें डाइवोर्स लाया गया। फिर हिंदू आदमी भी एक से अधिक शादियां कर सकता था। अपने दादा नाना को देख लो, कई लोगों की उनकी एक से अधिक शादियां हुई हैं। 1956 से पहले हिंदू आदमी भी 1, 2, 3 शादियां कर सकता था, स्टॉप लगा दिया गया 1956 में। हिंदू आदमी एक से अधिक शादी करेगा तो जेल में जाएगा। आगे आईपीसी का 494 बाइगेमी, इफ यू मैरी ट्वाइस यू विल बी जेल्ड, उसको जेल दे दी गई। ऐसे हिंदू सक्सेशन एक्ट तो 2004 तक अमेंड होता गया, सेक्शन 6 कि दादे की प्रॉपर्टी में पोते का हक था, पोती को भी हक मिलेगा। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आया और हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया। ये चारों एक्ट्स आए, हिंदू रिलीजन वाज नेवर द सेम अगेन। उस समय भी बहुत हाहाकार मचा, सब लोगों ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। हाउ कैन you are not even talking to the stakeholders, you are totally changing the Hindu religion, Hindu law। खूब वहां बात हुई, लेकिन लॉ चेंज कर दिया गया। और अंबेडकर जी ने कहा कि when you are having a uniform law and you are changing and codifying the law for 80% of the population, why not for 20% of the population? पर वो नहीं किया गया। टच मी नॉट पॉलिसी टुवर्ड्स इस्लामिक हिंदू लॉ लगातार चेंज होता गया। उसके बाद क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, अगर मैं 2 मिनट में और बताऊं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियंस का भी वो रिलीजन था, तो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए थे, वो चारों लॉज क्रिश्चियंस के लिए भी ले आए। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में अडॉप्शन नहीं होता, वो सिर्फ हिंदूज में ही होता है। पर अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उन्होंने अपील की तो अडॉप्शन के राइट्स दे दिए गए हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर क्रिश्चियंस के लिए भी सारे लॉज ब्रिटिशर्स लेकर आए। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के आसपास, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865, और लगातार पिटिशंस फाइल की क्रिश्चियंस ने सुप्रीम कोर्ट में कि क्या बात है, जो हिंदूज हैं वो 1 साल वेट करते हैं डाइवोर्स फाइल करने के लिए, हम क्यों 2 साल तक वेट करें, सेम करो। तो जस्टिस विक्रमजीत ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लेकर आते? तो टाइम एंड अगेन कोर्ट्स हैव सेड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। तो यहां क्रिश्चियन लॉ रिफॉर्म हुआ
हिंदू लॉ टोटली रिफॉर्म, टोटली कोडिफाइड हुआ, पर मुस्लिम लॉ नहीं हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक हेजिटेशन रही उसको रिफॉर्म करने की। और वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सर भी अभी कह रहे थे, 𝗏𝑠𝑢 माली की जजमेंट, जो कहते हैं ना सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जैसे ही आजादी आई और तभी पाकिस्तान बन के हटा था, सोशल डिसहार्मनी थी। 1952 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस 𝗏𝑠𝑢 माली, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस 𝗏𝑠𝑢 माली का केस है। उसने क्या कहा, आदमी ने 2 शादियां कर ली, हिंदू लड़का था, उसको कहा तेरे को जेल होगी। अब कहता मुझे जेल क्यों हो गई? अगर इस्लाम में 1 से ज्यादा शादी अलाउड है और मेरी जो पहली पत्नी है उससे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है नहीं, और हमारे यहाँ पर बेटा ही पिंडदान कर सकता है मरने के बाद, और पिंडदान मेरे रिलीजन का अभिन्न अंग है। बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? तो मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दो, वरना जो इस्लाम है उसमें दोनों 1 से ज्यादा शादियां बंद करो। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। उनको जो चीज अलाउड है मुझे अलाउड क्यों नहीं है? मुझे अलाउ नहीं करे, उनको भी अलाउ नहीं करे। एंड वी हैड वंडरफुल जजेस, वेरी प्रोग्रेसिव जजेस। पर कई बार प्रोग्रेसिव जजेस भी ऐसी ऐसी जजमेंट दे देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ना उस रिलीजन में 30 साल पीछे छूट जाती है। वी हैड �MC छागला जी, आई थिंक अदर जज वाज हिदायतुल्लाह जी, वंडरफुल जजेस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो 𝗏𝑠𝑢 माली ने कही, उसने कहा कि आर्टिकल 13 कहता है कि any practice which existed before the constitution came into being and which is in violation of fundamental rights has to go. तो आप ये जो प्रैक्टिस है 1 से ज्यादा शादियों की, हटाओ इसको आप, क्योंकि आर्टिकल 13 कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, विमेन के अगेंस्ट है, हटाओ इस प्रैक्टिस को। अब कोर्ट्स तभी भारत आजाद हुआ था, अभी शायद भारत तैयार नहीं था, या जजेस तैयार नहीं थे, या सरकार का प्रेशर था, गॉड नोस क्या था, मुझे नहीं, आई वाज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम। लेकिन जो जजमेंट आई, वो जजमेंट क्या आई, जिस सर ने भी बताया कि आर्टिकल 13 में जो पर्सनल लॉज हैं, दे आर नॉट लॉज एज पर आर्टिकल 13। यानी सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। पर पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई कि इन पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ा जाएगा। कोई भी मुस्लिम विमेन अगर कोर्ट में जाती, कोर्ट कहते हैं पर्सनल लॉ का मामला, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। 35 साल लग गए। शाहबानो आई, मेंटेनेंस के केस में आर्ग्यू किया, वो एक पूरा बवाल मचा। फिर शायरा बानो आई अभी, जिसने कहा कि ट्रिपल तलाक को खत्म करो, फिर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। पर मैं कोर्ट्स के बारे में जरूर कहूंगी कि अवर कोर्ट्स हैव डन अ सुपर्ब जॉब। आप देखो, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, आर्टिकल 125 सेक्शन 125 CRPC जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो हिंदूज मुस्लिम सब पे लागू होता है, इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। तो जब तब की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कुरान द मेंटेनेंस कैन बी गिवन इन फॉर ओनली 3 months टू अ मुस्लिम वुमन, और लॉ लेकर आ गए, उस समय कोर्ट चुप थी। पर 12 साल के बाद जब डेनियल लतीफी जो था, जो शाहबानो के लॉयर थे, वो कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये जो आपका लॉ है ना कि मुस्लिम महिला को सिर्फ 3 महीने के लिए मेंटेनेंस मिलेगी, ये गलत लॉ है। तो कोर्ट ने ब्यूटीफुली उसको पढ़ना चाहिए जजमेंट को, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि जो होली कुरान की आयत है वो अगर कहती है कि 3 महीने तक मेंटेनेंस देनी चाहिए केवल, पर वो जो कहती है यू हैव टू गिव फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस विद इन दीज 3 months, यानी पूरी लाइफ लॉन्ग जितना पैसा चाहिए मुस्लिम महिला को उतनी आप मेंटेनेंस दीजिए, पूरी मेंटेनेंस दीजिए, पर तलाक के पहले 3 महीने में ही दे दो सारी मेंटेनेंस। तो ऐसे करके जो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दे हैव कम इन एड ऑफ द women of the country and all the deprived sections of the country। तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे, अभी आप देखिए 4 शादियां गई हैं, बाकी भी सब केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women has to go because it is against the constitutional trinity
against constitutional morality of Article 14, 19, 21. और गोवा आप सब लोग जाते होंगे, गोवा में घूमने जाते होंगे, गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है. गोवा में, गोवा was not a part of India. गोवा 1961 में it became part of India. वहां पोर्चुगीज सिविल कोड चल रहा था कि पोर्चुगल गोवा पर रूल करता था. तो 1967 में यही अडॉप्ट किया गया. आज भी गोवा में वही पोर्चुगीज सिविल कोड चल रहा है. जब इंडिया का पार्ट बना तो इंडिया ने कहा आप हमारा आईपीसी सीआरपीसी लेना चाहते हो तो नमस्ते कर दी गोवा ने, हम हमारे कानून में ठीक है. तो गोवा में जो पोर्चुगल सिविल कोड है, दैट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड. इट डज नॉट हैव 4 marriages, it does not have talaq. It gives equal right of succession to Muslim man also and Muslim women also. And I think people are happier in Goa than in Delhi. तभी हम कहते हैं ना छुट्टियों में गोवा जाएंगे घूमने के लिए. तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड in one line is any discrimination against women has to go, be it any religion. Thank you, ma'am. Perhaps the last question from a very bright student of Campus Law Center, Farooq, is coming in with a question, and that is for both Justice Ansari and Monica, ma'am. And that would be the last question for the day. Good evening, ma'am. So, ma'am, my question is in the context of Karnataka High Court, how do we categorize the dressing of an individual where women's clothes are consistently in a controversy? Secondly, how do we interpret the natural rights of a citizen, particularly the right to choose the clothes, which are mentioned under various international human rights instruments? Ma'am, perhaps Justice Ansari can take the question if he has heard. Given a choice, I will say, let Madam Monica take up this. Sir, after you, sir. No. Judges always have the last say. Okay. Honestly, you are speaking very well. Yes. So, what I heard and understood is right to choose your dress. मेरी मर्जी. अब ऐसा है कि यहाँ मर्जी चलती है. पहली बात, भारत में मर्जी चलती है कॉन्स्टिट्यूशन की. जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत होगी, कंप्लायंट होगी, वो तो चलेगी. जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होगी वो नहीं चलेगी. नसू अप्पा माली की मर्जी की मैं तो और सुंदर और यंग स्त्री से शादी करना चाहूंगा, नहीं चलेगी, वो जेल में जाएगा. आज कोई तलाक बोलेगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो जेल में जाएगा. तो मर्जी चलेगी भारत के संविधान की. ये भारत ने 1950 में तय कर दिया था. We the people of India give to ourselves this constitution which ensures equality, liberty and dignity for all. ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा ध्येय वाक्य है. अब इसमें अगर मैं कल को कोर्ट में जाऊं, मैं कोर्ट में कहूं मैं तो ये येलो कोट पहनूंगी, मैं ब्लैक कोट नहीं पहनूंगी, मैं तो अपना बैंड नहीं पहनूंगी. It can't be. This is a dress code for particular places. यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर हिजाब पहनना है, पहला तो कौन कह रहा है? 17 साल, 16 साल, 15 साल की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, क्या वो खुद कह रही हैं या पेरेंट्स इनको कहला रहे हैं? और नर्सरी से लेकर वो 10th तक अगर स्कूल में आज तक हिजाब में नहीं आई, और सितंबर अक्टूबर में जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका जो कैंपस विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसने मेंबरशिप ड्राइव की और ब्रेन वॉश किया. उसके बाद सडन इरप्शन हो गया जिसमें FIRs भी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो क्या वो रियली अपनी चॉइस की बात कर रहे हैं? वो अगर फेसबुक पे पोस्ट जीन्स और ट्राउजर्स में, देयर फाइन. वो जीन्स में डाल रही हैं, घूम रही हैं, बिना हिजाब के घूम रही हैं. सडनली 2022 में क्या हो गया? वो कहते हैं हम तो हिजाब पहन कर ही आएंगे. तो क्या चॉइस है उनके पास, या उनको ब्रेन वॉश करके कंपल्सरीली जबरदस्ती की जा रही है? एक बात. दूसरी बात, हम जब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रेयर करते हैं घर में, कुछ भी पहन सकते हैं.
हम फेस्टिवल्स में प्रेयर करते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान थोड़े ना, या अरब कंट्री थोड़े ना कि रोक देगा आपको। एक सेक्युलर कंट्री है, एक सर्वधर्म संभाव कहती है। हम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, बखूबी कीजिए, आराम से कीजिए, पर जब आप पढ़ने के लिए एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में जहां सबके लिए ड्रेस कोड है, तो वहां यू हैव टू अबाइड बाय द ड्रेस कोड। कौन सा जजमेंट था वो? केरला हाई कोर्ट का, फातिमा का जजमेंट था। वो लड़की कहती है मैं तो हिजाब पहन के आऊंगी, मैं तो फुल कपड़े पहन के आऊंगी, बाहें ढककर आऊंगी। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया यू हैव अ फंडामेंटल राइट, वो एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन था, यू हैव फंडामेंटल राइट टू वेयर व्हाटएवर यू वांट, लेकिन ये जो लार्जर राइट है ऑफ द इंस्टीट्यूशन, योर इंडिविजुअल राइट हैज टू गिव वे टू दिस लार्जर राइट। You can take a transfer certificate. You have a number of religious institutions where they allow you to wear whatever you want and go and study. You take a transfer certificate, go and study there. But if you're coming in these institutions, you have to abide by their rules and regulations. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आर्टिकल 25(2) कहता है state can regulate the secular activities, the social, religious, economic activities associated with religion. State can make laws to reform a religion in social interest, in public interest. तो हम बात कर रहे हैं, बुर्के की तो बात ही नहीं है, बात है एक स्कूल क्या सबको कह सकता है सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है वही पहन कर आएंगे? इतना ही क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है। आप बाजार जाइए, आप पूजा करिए, आप नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है? मैंने कहा ना, ये अरब या पाकिस्तान नहीं जो रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पर। और आज तक नहीं पहनते थे। फैज के केस में, आखिरी 1 मिनट, फैज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैज वर्सेस आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया है वो केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कहता मैं कांस्टेबल हूँ केरला का, मैं कांस्टेबल हूँ, और वो जब घर गया वो अपनी दाढ़ी बढ़ा कर आया, तो पुलिस के उसमें है कि आप ये सिंबल्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि नहीं, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि मैं दाढ़ी रखूंगा। तो कोर्ट ने पहली बात कही, कोर्ट ने कहा जब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, पुलिस सर्विस, क्लियरली कहा गया था कि कोई भी रिलीजियस सिंबल्स आप नहीं कर सकते क्योंकि सेंसिटिव पोस्ट में आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आपकी ये नहीं है टू हैव अ बियर्ड। सेकेंडली, कुरान इसको मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं कहता है। थर्ड, अब तक 20 साल तक आपने रखी नहीं है, आज सडनली घर गए तो क्या हो गया? आ रहे हो कि मेरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई? इट कैन नॉट बी। सो आइदर यू हैव टू गेट इट रिमूव्ड और यू हैव टू, यू कांट कम हियर विद दिस। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है फैज के केस में। तो लॉ इज वेल सेटल्ड, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्लस आर्टिकल 14, 19, 21 को एडहियर करोगे, और प्लस स्टेट कैन ऑलवेज रेगुलेट द सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन। थैंक यू। जी सर। Justice Ansari, the last one. You don't add anything, you can conclude. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you so much, sir. That marks the end of a very fantabulous town hall. And I request Dr. Seema Singh for the closing remarks and a vote of thanks. Thank you so much to all the speaker. It was truly a very fantabulous discussion. और इसमें हमने, because the matter has already been decided by the Karnataka High Court and it is sub judice before the Supreme Court of India. So we were basically trying to make an opinion कि किन चीज़ों पे एक discussion होना चाहिए, because ultimately the decision is going to be pronounced by Honorable Supreme Court of India. But from this healthy discussion and a very constructive discussion and debate, the things which basically, which I believe that the things upon which the discussion should happen, there are certain questions which are very much important, especially when we are going to talk about the constitutionality or the spirit of the constitution. So I'm just going to conclude with certain questions which I personally believe that being the part of the legal fraternity, each of us should definitely think over it.
एक इसमें पहला सवाल है, मोनिका मैम ने भी जैसे बार बार बोला और अंसारी साहब ने और कासमी जी ने भी बोला, when we are going to talk about the fundamental rights, द गोल्डन ट्रायंगल थ्योरी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 14 पे इक्वलिटी और 30 पे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी राइट की बात की गई है, तो क्या इस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? सो देयर इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल कि 14 इज द सुपीरियर मोस्ट, दैट इज द रीजन कि इसको सबसे पहले रखा गया है. एंड वी ऑल आर अवेयर दैट आर्टिकल 14 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. लेकिन यहाँ पे एक नया सवाल मेरे जो जहन में आया और मुझे लगता है हम सबको इस पर डिस्कशन करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है, 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और सेक्स और व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई कम्युनिटी ये कहे कि उसको इक्वालिटी चाहिए ही नहीं, वो जहां पे है वो वहीं पे ठीक है, and even if the constitution of the society is progressive and they are moving forward, but मैं अपने लेवल पे संतुष्ट हूं, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि in this case if there is a conflict, then whether the constitution should come forward to give protection to the progressive thought or the progressive approach, या regressive approach को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए इसलिए क्योंकि एक कल्ट आगे जाने के लिए तैयारी नहीं है. And I will take the example of Sabrimala judgment. इन सबरीमाला जजमेंट जो पेटिशनर्स थे वो लॉर्ड अयप्पा के बिलीवर्स नहीं थे, और जो बिलीवर्स थे उन्होंने पेटिशन फाइल ही नहीं करी थी. बट इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अदरवाइज व्यू. उन्होंने बोला कि नहीं, द ओनली डिसेंडिंग ओपिनियन वाज गिवन बाय जस्टिस इंदू मल्होत्रा. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अप्रोच लगाई और उन्होंने बोला कि नहीं, women have right to enter in the Sabrimala temple. The matter is sub judice. I'm not going into the detail, but I'm just raising a question कि अगर आज एक स्त्री कहती है कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके साथ वो सती होना चाहती है और ये उसका चॉइस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसको फोर्स कर सकता है कि हम आपकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ और आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड? सो दिस इज, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा मेरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आगे डिस्कशन में आना चाहिए वो ये है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो हमारा ड्रेस होता है दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ. लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक अप्रोच बताई आपकी कि प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव अप्रोच में, अगर मेरी रिग्रेसिव अप्रोच या रिग्रेसिव थॉट है तो क्या मुझे मेरे रिग्रेसिव थॉट्स के साथ रहने देना चाहिए? बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. The next important thing is basically related with the right of the receivers, which is very much important, especially at the public places. Right of the receiver का मतलब ये है कि अगर मैं क्लास में क्लास ले रही हूँ तो एज अ टीचर क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके ये डिसाइड कर सकूं कि मैं प्रॉपरली अपनी बात को उन तक कम्युनिकेट कर पा रही हूँ कि नहीं? या even otherwise in any public place, either the matter is related with the police forces or the educational institution or any other organization, जो रिसीविंग एंड पे है, क्या ये उसका राइट है कि वो अगले की आइडेंटिटी के बारे में जाने कि वो किससे बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसके एक्सप्रेशन को देख करके वो ये रियलाइज कर सके? बिकॉज फेस, आई थिंक इट हैज इट्स ओन जुरिस्प्रूडेंस एंड इट हैज इट्स ओन वैल्यू. तो रिसीवर का कितना इंपॉर्टेंट राइट होता है? There's a lots of discussion over the essential religious practices. तो एक मेरे ख्याल से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर essential religious practices में suppose, because जब भी कोई religion डिमांड करता है तो हमेशा वो यही बताता है कि this is the part of the essential religious practice of my religion, and it always happens, चाहे वो हम हिंदू ले लें, मुस्लिम ले लो, या जब हिंदुइज्म में भी मैरिज को रिफॉर्म करने की बात हुई थी या कोडिफाइड किया गया था हिंदू लॉ को, देन देयर वाज अ लॉट्स ऑफ resentment कि this is the essential part of our religion. But obviously when there is a conflict, even if something is very essential, but that is going to be changed from one place to another place. तो first thing कि definitely that is not essential. जैसे कि इसमें एक बड़ा important सवाल है कि there are many Muslim countries where it is not mandatory. तो अभी इकबाल अंसारी साहब ने भी बात किया कि ये चॉइस है, ये कंपल्शन है, ये क्या है, इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए. लेकिन जहाँ पे इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में मान लीजिए अगर है भी, एंड दैट इज इन द कंफ्लिक्ट of the spirit of the constitution, then in a secular country, whether the spirit should be protected, the spirit of the constitution should be protected, or that
essential practice should be protected, or so-called essential practice should be protected, that is in conflict with the constitutional morality. And I think the next question, which is very much important and which has come out from this discussion, ki conflict between religious identities and fraternity. Because, once we go and read the preamble of the Indian Constitution, there is one term which is normally not taken care even by the judiciary, and that is the term of the fraternity. So are we going to encourage something at the public places which is emphasizing on creating identities? जैसे हमने कर्नाटका में देखा कि लड़के सैफ्रॉन पहन करके आए हैं, लड़कियां कुछ और पहन करके आई हैं, तो क्या हम आइडेंटिटी क्रिएशन को प्रमोट कर सकते हैं क्या? और अगर हम करते हैं, क्योंकि अगर एक ने आज कुछ किया तो कल दूसरा भी कुछ करेगा, फिर तीसरा कुछ करेगा, then in that circumstances, how the very fundamental part of the Indian Constitution, and that is the fraternity part, how we will protect that? नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा सवाल किसी बच्चे ने पूछा था, लिबर्टी ऑफ चॉइस की बात की गई एंड चॉइस ऑफ लिबर्टी की बात की गई। तो यहाँ पे चॉइस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ये होगा कि चॉइस में जो हम ऑप्शंस चॉइस के देंगे वो ऑप्शंस भी फेयर एंड रीजनेबल होने चाहिए, और जिसको हम ऑप्शन दे रहे हैं क्या ये उसके खुद की चॉइस है या उसकी ग्रूमिंग को हमने इस तरीके से किया है कि उसके पास उसके अलावा हमने कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है। तो राइट टू चॉइस में right to have a fair choice, whether this is also something which is very essential and very much implied whenever we are going to talk about right to choice. And the last one, the second last one is when we are going to talk about the religious practices at public places, whether the no harm theory should be applied whenever we are going to claim anything which we are claiming that is the essential part of the religion. And the last question is कि अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एंड अकॉर्डिंग टू द 2006 में एंड अकॉर्डिंग टू द सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली मुस्लिम कम्युनिटी इज वेरी बैकवर्ड। यहाँ पे भी किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा तो उनका स्कूल वो जा पाएंगी कि नहीं जाएंगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच शुड बी डिस्कस। लेकिन इसमें एक सवाल और है, क्योंकि हमने देखा कि नॉट ओनली इन इंडिया बट स्पेशली इन द इस्लामिक कंट्रीज women have a great struggle किस चीज को लेकर के था कि इस पर्दा प्रथा से वो बाहर निकले। यहाँ पे we are going to allow such things in the schools, तो जो बच्चियां हिजाब नहीं पहनती हैं क्या हम उनके ऊपर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको पहनने के लिए? और अगर हम करते हैं then basically ultimately that is going to be beneficial for them in the long run or not? That is also a very important question which basically this DDS is going to put before the court and before all the respected member through this forum. So I think all these questions, I request you all to think over it, because definitely when the matter is going to be raised or put before the Supreme Court, these questions are definitely going to be raised. And being the part of the legal academy and the legal fraternity, we all should think over it. So with this, I will just conclude this session, and I will extend my big thanks to all the three speakers. Unfortunately, Rubika ji could not join. So Justice Iqbal Ansari sir, you always accept my invitation. So I'm extremely thankful to you, and you always provide me your support. So thank you so much, sir. Thank you so much. Monica ma'am, thank you so much for giving your, for enlightening all of us. And Maulana sahab, and thank you so much, क्योंकि ये कुरान को लेकर के बहुत कुछ चीजें चलती हैं कि कुरान में क्या कहा गया है, और एटलीस्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी कुछ समझ में आया आपके थ्रू, और जिन्होंने पढ़ा उनको तो चलिए उनको भी कुछ क्लैरिटी स्टैब्लिश हुई. एंड गुंजन गुप्ता मैम, thank you so much for providing your valuable time and being with us and providing us your constant support. And all above, all the students of the GDS committee, thanks to each of you. And with this, I am just going to conclude the session with this hope that this discussion is going to be fruitful in some or other ways to creating a positive atmosphere in the society, as well as the matter which is going to be heard by the Supreme Court in the coming days. So thanks to all of you. Thank you so much.